Bom dia, namaskar, sejam bem-vindos. स्वागत है आप सभी का। तो espero que tudo esteja a correr bem, estudo, trabalho, tudo esteja bem em casa. Então, no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto, vamos falar sobre um assunto que é relacionado com o tipos de pagamento. Há pessoas que pagam por hora, há pessoas que pagam por mês, há pessoas, quer dizer, empresas, ou às vezes podem ser pessoas próprias também, ok? E às vezes fazem pagamentos através da transferência bancária, outras vezes fazem pagamento em dinheiro ou cheque, ou alguém paga 15 em 15 dias, outras empresas pagam tudo numa vez por mês, ok? Então, estes contextos hoje vamos ver neste vídeo, nesta aula, ok? Então, primeiro vamos ler e depois vamos abordar algumas coisas novas que vamos ver aqui, tá bom? Então, mais uma vez, uma conversa entre duas pessoas, Manjit e Carlos, ok? Olá, bom dia, senhor Carlos. O meu amigo Sagar deu-me o seu contacto. Olá, bom dia, sim, sente-se. Temos alguns empregos, mas na agricultura. Posso trabalhar na agricultura? Quais são as condições? E paga em dinheiro ou... Bom, pagamos 8,5 € por hora. E por dia só pode trabalhar durante 8 a 10 horas e efetuamos o pagamento 15 em 15 dias ou por mês, se assim quiser. Se for necessário, fazemos os descontos para finanças e para a segurança social. Sempre efetuamos o pagamento pela transferência bancária e se não tem contrato, vai ter de que nos emitir o recibo verde pelo valor que vai receber. Muito obrigado pelas informações. Vou aparecer amanhã na morada indicada. Muito bem, obrigado e até amanhã. ठीक है? तो o meu amigo Sagar deu-me o seu contacto. Deu-me, deu que से है dar, है ना? तो सागर ने मुझे आपका कांटेक्ट दिया है. तो bom dia. Sim, sente-se. Temos alguns empregos, mas na agricultura हमारे पास कुछ काम तो है, लेकिन खेती में ही, किसानी में, है ना? खेती में. तो posso trabalhar na agricultura. Quais são as condições? Conditions क्या-क्या हैं, है ना? क्या है? ये पागे हैं dinheiro ou आप कैश में देंगे पैसे और है ना? बों ठीक है, तो ये बों नहीं है। ये बों होता है किसी बात को बदलने के लिए, कोई सीरियस बात शुरू करने के लिए, है ना? तो bom, pagamos 8,5 € por hora. पुर्तगाली में जो है कि जैसे हम हिंदी और अंग्रेजी में जो डॉट देखते हैं, तो डॉट का काम पोर्चुगीज में कॉमा करता है और कॉमा का काम डॉट, है ना? तो कहीं पे अगर आपको 30.5 लिखना है ना? या 30.30.546 लिखना है तो 30,546, है ना? और अगर कहीं पे आपको बोलना है कि 10,520, 10,000 के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, पुर्तगाली में हो जाएगा 10,000.250। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डॉट और कॉमा का इस्तेमाल पुर्तगाली में थोड़ा और या ठीक उल्टा है, जैसे हम हिंदी या भारतीय भाषाओं में करते हैं। तो pagamos 8,5 € por hora e por dia só pode trabalhar durante 8 horas और हर दिन, ठीक है, por dia, प्रत्येक दिन, है ना? और कितना? 8.5 € तो आमतौर पे पुर्तगाल में खेती में जो लोग काम करते हैं यही रेट है, 8.5 या 10, है ना? por dia. E só pode trabalhar durante 8 a 10 horas, है ना? तो ऐसा नहीं कि आप काम मिल गया तो आप 16 घंटे खेती में काम कर सकते हैं या 20 घंटे काम कर सकते हैं, नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 से 10 घंटा आप काम कर सकते हैं, जो कंपनी बोल रही है। Efetuamos o pagamento. Efetuar o pagamento, है ना? तो बहुत बार जो है कि fazer o pagamento, pagar, ये भी इस्तेमाल होता है। और एक जो बहुत फॉर्मल तरीका है इस्तेमाल करने का, वो है efetuar o pagamento. Efetuar o pagamento 15 em 15 dias, हर एक 15 दिन पे पेमेंट करेंगे। ओ por mês, महीने पे भी कर सकते हैं, se assim quiser, अगर आप ऐसा चाहें, है ना? Se assim quiser, ठीक है? उससे quiser, se for necessário, अगर ज़रूरत हुई तो हम जो है कि fazemos os descontos। तो डिस्काउंट डिस्काउंट वाला नहीं है, ये है डिडक्शन। किसके लिए? फाइनेंस के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर आपका एक लेवल से ज़्यादा पैसा आप महीने का कमा रहे हैं तो कंपनीज को उसमें से फाइनेंस के लिए, टैक्स के लिए और सोशल सिक्योरिटी का पैसा काट के आपको देना है, ठीक है? तो fazemos os descontos para finanças e para a segurança social। Sempre efetuamos o pagamento pela transferência bancária। हम कंपनी जो है, जिस कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कार्लोस जिसकी बात कर रहे हैं, वो कंपनी हमेशा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के जरिए ही पेमेंट करती है ना? E se não tem contrato,
अगर आपका महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वाई तेरद नुश, तो ये तेरद है ना, तेरद फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करना ही है वैसा। अगर नहीं तो फिर आपका काम या पेमेंट नहीं होगा। तो वाई तेरद के नुश इमितेर, इमितेर क्या है, टू इश्यू क्या, वो रेसिबो वर्ड पेलू वलोर को वाई रेसिबे। तो जितना भी आपका अमाउंट बनता है, मान लीजिए 15 दिन आपने काम किया, 1,000 यूरो आपके बनते हैं, तो 1,000 यूरो के लिए आपको रिसीवेबल उसको कंपनी को देना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। Muito obrigado pelas informações, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। वो ser a menina morada indicada, morada एड्रेस indicada। तो उसको मतलब इंटरव्यू में बातचीत से पहले उसको पता लग गया था कि कहाँ पे काम चल रहा है ना। तो वो ser a menina namorada indicada। Muito obrigado, muito bem, obrigado e até amanhã। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, então vejam bem este vídeo uma, duas vezes, leiam bem o que tem na apresentação e depois respondam as perguntas no fórum geral. Perguntas podem-se encontrar no ficheiro atividade. E assim esta secção ficaria completa, tá bom? Então sempre vão fazendo vídeo, apresentação, atividade, fórum geral. Ok? Qualquer dúvida, sempre me podem escrever e pronto, podem usar outros canais também que têm, ok? Muito obrigado, bom estudo, bom trabalho e até ao próximo vídeo. Muito obrigado, adeus, namaskar.